Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Bike Mate PK. Gentlemen, the bike that we have today is Harley Davidson V-Rod Muscle. This is 2013 edition. और इस बाइक के बारे में मज़ीद बताने के लिए I would like to call upon the owner of this bike and he's going to be telling us more about this bike. Assalamualaikum sir. Walaikum salam. कैसे हैं उमर? ठीक हैं? Alhamdulillah. Thank you. Would you like to introduce yourself? My name is Dr. Ambrose Emmanuel and I'm the owner of this Harley Davidson V-Rod Muscle. It's basically 2013 model and it was imported into Pakistan and just recently in June 2018 and I'm the first owner of this bike. So basically थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ V-Rod के बारे में. V-Rod Muscle is V-Rod in general is a very unusual Harley Davidson. So mostly the Harleys are usually they are air cooled engines. They are big V twin turbos and और इसके अलावा big heavy bikes, ठीक है, mainly the cruisers. लेकिन V-Rod was one bike जो कि एक collaboration था joint Porsche जो आपको पता है कि जो car manufacturing company है and Harley Davidson का. In fact it's a बड़ी exclusive चीज़ ये है कि it is the only bike जिसके बारे में Discovery ने proper एक पूरे का पूरा एक 50 minutes की documentary है that you can watch on YouTube. और this is the only bike or it is also considered as an engineering marvel in the biking world. So इसकी जो frame formation जब उन्होंने किया, ठीक है, that was also very exclusive. और basically the engine is a so it started in 2001 and 2002 to 2007 it had 1131cc V twin turbo engine. लेकिन 2008 onwards they upgraded that to 1247 which is a 1250cc engine. This engine is actually a 1250cc V twin 60 degree liquid cooled turbo engine, which is and basically I've got this performance Vance and Hines performance 2-in-1 exhaust system, which actually like increases another a few horsepower more to that as well. Aftermarket. Actually it's not basically aftermarket. Vance and Hines makes performance parts for the Harley Davidson motorcycles, and usually they say that if you got a Harley Davidson and the pipes are not louder, that means that you are basically putting yourself on the risk. And loud and for the Harley users, usually they say that loud pipes save lives. And because you know on the highway when you're there, so people hear these loud pipes, and that's what actually leads to the safety of the bike as well. But this exhaust is basically it itself is a very expensive exhaust, and mostly V-Rod के साथ usually जो exhaust रहते हैं, they are twin exhausts on the sides. लेकिन this is actually, so when I imported that from States, so US से already जो था ये exhaust लगा हुआ इसके साथ आया था. This beast makes 125 horsepower, which is crazy, which is totally crazy. Exactly. This thing does 0 to 100 km per hour in 3.2 seconds. So this is a crazy fast bike. So it's a 5-speed transmission. As you जो कि तमाम जितने भी sports bikes और इसके अलावा Harleys के साथ होता है, the first gear is downshift and all the others are just reverse shift. ठीक है. The rear tire is a 240 mm tire. It's a Michelin Scorcher tire. इसके अलावा front पे जो है it's a 180. And the interesting thing about this bike is usually people perceive as this being the fuel tank, which it is not. Basically, it's an airbox and it's got a big air filter in there. The fuel tank is over here under the seat, and it has actually 3.2 gallons US gallons, which is about 16 liters of fuel in there. Usually the mileage, often people ask me कि जी भाई आपको ये क्या mileage देता है, which frankly speaking I have not like actually calculated that, but the documented mileage is on Wikipedia and all different places, and they say that it's 31 miles per gallon to in the city, and about 45 miles per gallon on the highway, which is about 5.7 liters for like 100 kilometers. But what I've noticed that is like when I brought this thing from Islamabad, so I bought it from the Harley store in Islamabad. So when I bought it from there, so when I was bringing that to Ahmedabad, so there was some light traffic, and also like I was the max speed that I went up to was about 120, but usually I just cruise it about 70, 80 miles or kilometers? Kilometers, not the miles. Yeah, okay. Kilometers. Okay. So मेरा तकरीबन जो था maximum Islamabad से Ahmedabad तक, I think it cost me like 900 rupees or something like that, which is like nothing. All right. For this base, it's nothing. Yeah, it's nothing. The tachometer basically has the meter's got a tachometer. It's an RPM meter. It actually
red lines at 9,000 RPM, Okay. and which is actually high for this beast. The meter is 150 miles, and then it's got a fuel gauge as well. And then basically this is the it has got a security system installed into that. I deliberately did not go for the speaker, or the security speaker, but I mean it has got a fob key, which is the Harley name for the security key. Okay. So without that, if I mean the key needs to be near the bike. That's when you can actually start the bike. Otherwise, you don't need to put it in. No. Okay. No. So basically, to lock the bike, that's when you put the key in. Okay. So it's got this integrated turn signals in the mirrors, Okay. and also in the rear brake light. And so it's still unregistered. I just recently bought it, and I need to actually register that. And that's actually coming up pretty soon. It's going to be registered soon. So got Harley Davidson foot pegs as well. Usually it does not come with the standard foot pegs that it comes with. They're sort of shorter and smaller, which are not really super comfortable when you're cruising it to different places. So Okay. but this color, the interesting word for this color is actually, it's called as candy orange. Okay. So this color is called as candy orange. This is a 2013. Unfortunately, Harley stopped making the V-rods in December 2017. So 2017 December was the last time when it was discontinued. Okay. So the Harley 750, Harley 500, and the new lineup of street bikes that the Harley has is introducing now. So they are using the same technology that they use in this bike in all those engines as well. All of those engines are smaller engines, liquid cooled engines. So this is, I mean, I'm not saying this because I own this, but usually they say that this is basically the most eye-catching Harley Davidson, the V-rod muscle. If you could just So basically I'm 6'5", and that's why it's sort of easier for me to sit on this bike, and usually gives me a good posture, and also a good control on the legs and thighs as well. And to balance the bike, this beast actually weighs about 375 kgs, so it's actually heavy. So you cannot really mess up with the bike, and you got to be very, very sure that you are actually in full control of this motorcycle. So the one thing that I really want to mention is basically the two variants. There's one V-Rod Muscle and the V-Rod Night Rod. So this is the V-Rod Muscle. The Night Rod is actually the special edition, which was it's got slight differentiation of the front signals and the mirrors, and also the tail light as well. So otherwise the engine is the same, it's the same power, same engine, but there's just slight cosmetic differences in the bike. Otherwise basically it's the same motorcycle. Yeah. Okay. So इसके फ्यूल के बारे में क्या है, क्योंकि एक रिकमेंडेड फ्यूल होता है, हाई ऑक्टेन हो गया, दूसरा इसका रिकमेंडेड फ्यूल क्या है, और यहाँ पे अवेलेबिलिटी का क्या सीन है? सो जो कार्बन 91 है, उनकी कोशिश रिकमेंडेड ये है कि इसमें कार्बन 91 डाला जाए, ठीक है, जो फ्यूल की रेटिंग जो रिकमेंडेड है. लेकिन पाकिस्तान में जो अवेलेबल है 87 भी अवेलेबल है, और इसके अलावा जो प्रीमियम अभी बिक रहा है, आई थिंक PSO ने अपग्रेड कर दिया 91 पे, उसको 91 है या 92 है. जो हाई ऑक्टेन है दैट इज़ 97. और प्रेफर यही किया जाता है कि इनमें हाई ऑक्टेन ही डाला जाए. लेकिन अभी ये अनफॉर्चुनेट बात है कि एबटाबाद में अभी तक हाई ऑक्टेन अवेलेबल नहीं है. अभी हमारे ग्रुप के एक शख्स थे, वो बता रहे थे कि ही टॉक टू ये जो कुरैशी पंप पे उन्होंने बात की, और वो लोग कह रहे हैं कि हम अभी हाई ऑक्टेन जल्दी मंगवाने वाले हैं. सो ये एक अच्छी न्यूज़ होगी. लेकिन फ़िलहाल अभी हम ये करते हैं कि हम इसमें बड़ा एक्सक्लूसिवली सिर्फ 1-2 पंप्स हैं जहाँ से हम इसमें फ्यूल डालते हैं. और क्योंकि अगर इन बाइक्स में आप गंदा फ्यूल डालते हैं तो आप समझ लें बाइक्स का बेड़ा गर्क कर देंगे. सो यूँ समझ सकते हैं. लेकिन फॉर द टाइमिंग आप ये कर सकते हैं कि, और मैं दूसरे लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप रेगुलर फ्यूल डाल रहे हैं और उसमें आपको हाई ऑक्टेन नहीं मिल रहा, तो आप ये कर सकते हैं कि आप उसमें जो फ्यूल एडिटिव्स मिलते हैं, लिक्विमॉली के मिलते हैं, इसके अलावा 1-2 और अच्छी कंपनीज़ हैं, यू कैन यूज़ दैट एज़ वेल. ठीक है. हाँ जी. या एक्चुअली फॉर द सेफ्टी ऑफ द इंजेक्टर्स, उसके लिए. ओके, फैंटास्टिक. तो अब छोटी सी बात आप इसमें हमें ये बताइएगा कि प्रोस तो इसके काफ़ी सारे हैं, मतलब पर्पस बिल्ड बाइक है ये. कौन से इसको अपार्ट फ्रॉम ट्रैफिक एंड ट्रैक, इसके क्या आपको इसके कॉन्स? सबसे पहली चीज़ मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि दिस इज़ नॉट अ वेरी ईजी बाइक टू राइड. ठीक है. 1, इट्स हैवी.
सेकंड आपको वेट मनूवरिंग इसकी डिफ़िकल्टी इस लिहाज से लाइक स्पेशली जब हम नथिया गली वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर इसकी मनूवरिंग थोड़ी सी मुश्किल है आम बाइक्स के मुकाबले में या दूसरी हैवी बाइक स्पोर्ट्स बाइक्स के मुकाबले में। एक तो उसका वेट, सेकेंडली चूँकि इट्स अ लार्जर बाइक, ठीक है, काफ़ी लंबी है और उसकी वजह स्पेशली जो इसका पिछला टायर है, येस इट गिव्स लोड्स एंड लोड्स ऑफ ट्रैक्शन ऑन द रोड, लेकिन जब आप कॉर्नरिंग कर रहे होते हैं तो कॉर्नरिंग के दौरान आपको बहुत केयरफुल होना है बिकॉज अगर आपने अगर थोड़ा सा ऑयल भी अगर रोड पे है तो इट कैन स्लैप, ठीक है, और खुदा ना खास्ता अगर ये गिर जाए तो इट्स अ 375 kg बाइक, सो आप समझ लें कि फिर काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। ये एक कौन है। सेकंड ये है कि ऑफ कोर्स जो हार्ले जितनी भी होती हैं दे आर लाउड बाइक्स, ठीक है, बिकॉज बहुत बड़े इंजन है, 1250 cc इंजन, और अगर आप ऐसी नेबरहुड में रहते हैं जहाँ पे आपके नेबर्स जो हैं दे डोंट रियली लाइक द नॉइजी मोटरसाइकिल्स, सो लेकिन यू कैन नॉट हेल्प इट बिकॉज दैट्स द वे दे आर। और ये हार्ले का बेसिकली लाइक समझ लें कि इट्स अ ट्रेडमार्क इंटरनेशनली कि यूजली इनकी बाइक्स होती हैं लाइक दे आर सॉर्ट ऑफ नॉइजी एज वेल। सो ये मेरे ख्याल से ये दो हैं, या मेरा ख्याल है ये दो कॉन्स हैं। इसके अलावा आई डोंट सी एनी अदर कॉन, एंड ये है कि आई मीन मेन पॉइंट ये है कि वट एवर यू हैव, जो कि थोड़ी देर पहले जब आपसे बात भी कर रहा था कि लाइक वट एवर विच एवर बाइक यू राइड, मेन पॉइंट ये है कि जो भी आपके पास मशीन मौजूद है, रिस्पेक्ट द मशीन एंड रिस्पेक्ट द राइडर। चीज़ है, कोई भी चीज़ बंदा जब खरीदता है वो एक्सीडेंटली नहीं खरीदता, उसके पीछे काफ़ी रिसर्च होती है, कुछ नीड्स होती हैं, कुछ सारा कुछ होता है। तो क्या सोच के आपने ये बाइक खरीदा था, और इस अगर ये बाइक ना खरीदते तो इसका अल्टरनेट कौन सा बाइक आप चूज़ करते? दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि एक्चुअली मुझे याद है कि फ़र्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू स्टेट्स, तो मैं वहाँ पर मैं एक मीटिंग के लिए एक शख्स के साथ जा रहा था, एंड आई वाज सिटिंग इन द राइट साइड, जो पैसेंजर साइड थी, और मेरे पास से 2-3 हार्ले डेविडसन गुजरी, और एकदम से मैंने कहा ये क्या है, और एकदम से जो था आई वाज सॉर्ट ऑफ स्टक। सो तब से एक ड्रीम था कि कभी ली तो आई वुड गेट अ हार्ले डेविडसन। और मुझे ज़्यादा स्पोर्ट्स बाइक्स का मुझे कोई ख़ास शौक़ नहीं है। आई थिंक अभी जिस स्टेज पे मैं हूँ लाइक आई मीन हालांकि कई दोस्त अब मुझे मजाक भी करते हैं कि जी डॉक्टर साहब अभी कितने आप बूढ़े भी नहीं हो गए, लेकिन ये था कि लाइक मुझे आई जस्ट फील के आई डोंट रियली आई डोंट हैव दैट मच इंटरेस्ट इन द स्पोर्ट्स बाइक्स, बट आई हैव मोर इंटरेस्ट इन द क्रूजर्स लाइन अप। सो और जैसे ही आपके दिल में क्रूज़र का नाम आता है, सो द फर्स्ट नेम दैट कम्स इन योर माइंड इज़ बेसिकली हार्ले डेविडसन। मैंने काफ़ी एक्सटेंसिव होमवर्क किया, रिसर्च किया इस पर, और आई वाज कंसिडरिंग यामाहा वी स्टार, इसके अलावा होंडा का एक बाइक आता है 770 cc, दैट्स अ वेरी गुड बाइक एज़ वेल। सुजुकी बुलेवार्ड M109R के बारे में मेरे जहन में था, विच इज़ usually considered as a direct competitor to the V-Rod muscle. But it comes with a huge displacement engine display. I think it is 18. It is an 1800 cc. लेकिन वो इतनी it was not that big of a deal because like engine size wise, bike size was almost the same bike. लेकिन जो मेरी reason थी ना लेने की उसको, in fact that was cheaper than this bike. लेकिन जो reason थी ना लेने की उसकी वजह ये थी because parts availability is a big issue. Harley की the good thing about Harley is although it's not the Harley dealership in Pakistan, lekin there are two big stores in Pakistan that are dealing with Harley. Part one is the Harley district that just opened in Karachi, and the Harley store is the older one, जो कि Karachi में, Lahore में, Islamabad में they've got the outlets. So basically parts availability was not a problem. This bike came with 1 year warranty, which was a good thing. When I bought it, it was originally driven only like 2526 miles सिर्फ चली थी, और अभी मेरे पास अभी ये है, और मेरे ख्याल से अभी शायद 2600 मील चली होगी टोटल। तो ये है कि जो मेन रीज़न थी इसको लेने की वो ये थी कि एक तो इसके पार्ट्स अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं है, और हार्ली इंजन्स जो होते हैं मोस्टली दे आर ईजी टू वर्क ऑन, मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है, और अगर आपको थोड़ा सा मैकेनिकल नो हाउ है तो आप इनको मोस्टली चीज़ों को जो है आप खुद कर सकते हैं। इनफैक्ट देयर इज़ अ सेइंग, अ फेमस सेइंग अबाउट हार्लीज इज़ if you are taking your Harley to the workshop repeatedly, it's better to sell it out. Yeah, exactly. So अगर आपने हार्ली लेके भी अगर आपने वर्कशॉप में भी लेके जानी तो that means कि उसको बेच दो, तो ये चीज़ है। तो स्पीकिंग ऑफ वर्कशॉप, ट्यूनिंग वगैरह का क्या सीन है, कहाँ से करवाते हैं? मैंने अभी तक करवाई नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग, अभी जब ये आया, लेकिन बेसिकली 5000 माइल्स पे इसका ट्यून अप होगा, और उसमें इसका ऑयल चेंज होगा, और इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं। सो मोस्ट प्रॉब्ली द फर्स्ट वन आई विल गेट इट फ्रॉम इस्लामाबाद। लेकिन अभी तक प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास इसका स्टैंड नहीं है, और इसकी और इतनी बड़े बीस्ट को सीधा खड़ा करना है, इट्स अ ट्रबल। सो अदरवाइज़ ऑयल चेंज करना कोई मुश्किल नहीं है, इसका फ़िल्टर चेंज करना मुश्किल नहीं है। इसका एयर फिल्टर इसके एयर बॉक्स के अंदर यहाँ पे लगा हुआ है। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स आर देयर, फ्यूल टैंक इज़ ओवर हेयर। सो ये है कि फ्यूल टैंक इसका यहाँ से
डोर ओपन होता है. दिस इज़ द फ्यूल टैंक वेयर यू पुट इन द फ्यूल. दिस इज़ एन SPEFI इंजन. और जो है बाकी इसके यहाँ पे बेसिकली ओरिजिनली जब ये आती है इसमें ये पैसेंजर कैरियर नहीं होता, ये बैक रेस्ट नहीं होता, इसके अलावा ये लगेज रैक नहीं होता. दीज आर यूजुअली सोल्ड सेपरेटली बाय हार्ले डेविडसन. सो ये चीज़ है. You got it pre-installed? Oh yes, I got it pre-installed. So जब मैंने लिया था, so it came pre-installed from States. Everything was installed already. Yeah. So thank you very much, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you. Cheers. Thank you. Thank you. All right. So gentlemen, this was the show today. I'm sure आपको पसंद आया होगा. Most of the things English में होगी, लेकिन मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है. कुछ बंदा टू बंदा भी डिफरेंट होता है. तो he was more comfortable talking in English. वो ज़्यादा comfortable थे इंग्लिश में बात करने के लिए. So manage it please. Thank you. I hope you will manage. Thank you very much for watching this video. I hope you like what you saw. And अगर आपको पसंद आई ये वीडियो, do give it a big thumbs up. And if you haven't subscribed, please make sure you subscribe before you leave. Thank you very much. Have a good day.